Good morning, students. This is Rupali Sharma, your English teacher from Vishisht School, Una. So, as you know, we had started chapter number 7, Glimpses of India's first part, and its name is A Baker from Goa, written by Lucio Rodrigues. So, in this chapter, we had read that the Portuguese loved eating various kinds of bread. They left Goa long back, yet the makers of these breads are still there. The narrator describes the role of the baker when he interacted with the baker called Peter. The baker came twice a day, once in the morning and in the evening. Evening means after finishing the job, he follows the same way. The baker would strike his bamboo with a jingling thud to wake up the sleeping children. मतलब बेकर के पास जो डंडा होता था, एक स्टिक होती थी, उस पर घुंघरू से लगे होते थे और उसको वो फर्श पे मारता था जिससे आवाज़ आती थी और लोगों को और बच्चों को पता चल जाता था कि बेकर आ गया है. द चिल्ड्रन वुड पीप इन टू बेकर्स बास्केट फॉर ब्रेड बैंगल्स. द सर्वेंट्स ऑफ द हाउसेज वुड टेक द ब्रेड फ्रॉम हिम. द ब्रेड हैड अ स्पेसिफिक रोल ड्यूरिंग द मैरिज विच वर incomplete without it. Means marriages were incomplete without the bread. Bolinhus is a kind of bread and it was very essential during Christmas and other festivities. The baker wore a special knee-length frock. It was known as kabai. The baker wrote the account on the wall and came to collect the money at the end of the month. Baking was a profitable profession. It could be judged from the physical appearance of the baker, who was a plump and had a good physique. तो ये समरी है थोड़ी सी चैप्टर की. तो थोड़े से चैप्टर की रीडिंग हो गई थी, 2 पेजेस की रीडिंग हमने कर ली थी एंड ओनली 1 पेज इज़ लेफ्ट. सो टुडे वी विल कंप्लीट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. So, marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. बोल होती थी एक स्वीट होती थी एक तरह की, और जो भी मैरिजेस होती थी वो इस स्वीट के बिना, इस स्वीडिश के बिना इनकम्प्लीट मानी जाती थी, मीनिंगलेस होती थी. मतलब अगर किसी शादी में ये बोल स्वीट नहीं होती थी तो लोग ऐसे सोचते थे कि यार क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला. Just as a party or a feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. Means there are no words to show the importance of the baker for the village. मतलब जो baker है वो गांव के लिए बहुत important person था. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals. जैसे मैंने आपको बताया, केक और बोलिनहस ये क्रिसमस और बाकी फेस्टिवल्स के लिए बहुत नेसेसरी होते थे. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. तो जो बेकर की ड्रेस होती थी उसको क्या बोलते थे? कबाही बोलते थे. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक. ये जैसे लॉन्ग फ्रॉक होती थी, और यू कैन से गाउन रीचिंग डाउन टू द नीज. लेकिन फ्रॉक ही बोल सकते हैं क्योंकि गाउन जो होता है दैट इज़ अप टू द फीट एंड दिस कबाई इज़ reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full-length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a painter. और कहते हैं कि अगर आज भी हमें कोई दिखाई देता है जिसने हाफ पैंट डाली हो जो नीज से नीचे हो, थोड़ी सी नीचे हो, तो हम बोल सकते हैं कि ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेटर. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. और जैसे जो भी पैसों की कलेक्शन होती थी वो एट द एंड ऑफ द मंथ होती थी. ठीक है, जैसे हम भी कईयों को जैसे दूध लेते हैं, ठीक है, अगर दूध वाला घर दूध देने आता है तो उसको जो पैसे हैं, the money is given at the end of the month. The same was here for the baker. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil.
Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. मतलब उस टाइम पे ये प्रोफेशन बेकिंग का इतना अच्छा था कि बेकर और उसकी फैमिली कभी भी, इट नेवर स्टार्व्ड मीन्स कभी भी भूख से नहीं मरी. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Means the baker, his family never starved, and he, his family, and even the servants in the shop were always happy and prosperous. Means उनका काम हमेशा बड़ा फूला. And their physique, their body build test that tells us that they were not starving from food. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. तो गोवा में आज भी अगर कोई बंदा कहते जैक फ्रूट की तरह दिखता है, मतलब गोल मटोल दिखता है, उसकी अपीयरेंस गोल मटोल सी होती है, तो सभी उसको क्या नाम देते हैं? दैट ही इज़ अ बेकर. सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. Tomorrow we'll do the exercise of the chapter and start the next chapter. So your homework is to write the summary of this chapter. Okay, bye beta. Have a nice day ahead.